हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल आर्प। आर्प की वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई डू वी नीड आर्प एंड हाउ डज इट वर्क, राइट। सो हम समझेंगे कि आर्प की हमें जरूरत क्या पड़ी एंड हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करता है, राइट। सो लेट्स गो बैक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो in this scenario where we have the 4 PC connected to the one of the switch, where we have a we are using 192.168.1.1 as we open the CMD and type the ping 192.168.1.4। सो हमने क्या किया, हमने CMD से 192.168.1.4 के लिए पिंग इनिशिएट किया। बट टू वर्क दिस पिंग, of course we have the destination IP address, we have a source IP address, but there is the another important information which is needed is the physical address, right? अब physical address क्या होता है? Physical address होता है MAC address, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, राइट। सो इस केस में क्या होगा, जब आप पिंग 192.168.1.4 को पिंग करने की कोशिश करोगे तो ये क्या यूज करेगा, आर्प कैश टेबल। आर्प टेबल क्या होता है, आर्प टेबल में क्या क्या होता है? सो लेट्स से वी हैव द इंटरनेट एड्रेस, right? And then we have the physical address, right? And then we have the type. Okay, so इसमें फील्ड में क्या क्या आता है? इंटरनेट एड्रेस में आता है आपका आईपी, राइट। फिजिकल एड्रेस में आता है आपका मैक एड्रेस, राइट। एंड टाइप में आता है डायनामिक या स्टैटिक। मींस आपकी वो इंफॉर्मेशन किस तरह से लर्न की गई है। इज दैट द डायनामिक एंट्री मींस इट बीइंग लर्न बाय द आर्क, और इज दैट बीइंग स्टैटिकली कॉन्फ़िगर, ठीक है। तो अब इस आर्क कैश टेबल में ये चेक करेगा कि 192.168.1.4 के लिए क्या मैक एड्रेस है, राइट, फिजिकल एड्रेस है। बट क्योंकि आर्क कैश टेबल में नहीं है तो वो कैसे काम करेगा? यदि है तो नॉर्मल फॉरवर्ड कर देगा। बट लेट्स से इट इज अ फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन, हाउ वुड इट डू दैट, राइट। तो उस केस में ये क्या करेगा, ये बेसिकली एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, ठीक है। आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और उस आर्प रिक्वेस्ट को सबको भेजेगा। सबको इन द सेंस ऑफ पीसी बी को भी, पीसी सी को भी, और पीसी डी को भी, राइट। अब ये कैसे होगा कि भाई इसने आर्प रिक्वेस्ट जनरेट की कि सबके पास चलेगी, राइट। उसके लिए दैट विल यूज द ब्रॉडकास्ट। सो एक ईथरनेट फ्रेम जनरेट करेगा, राइट। उसमें सोर्स मैक होगा। ईथरनेट फ्रेम में ऑफ कोर्स हमें मैक की जरूरत है, राइट, नॉट द आईपी, इट इज अ फ्रेम, राइट, लेयर 2। सो सोर्स मैक में होगा पीसी ए का मैक, राइट। एंड डेस्टिनेशन मैक में होगा फ्रेम के अंदर विच इज द एफएफएफ, मींस ब्रॉडकास्ट। क्यों? कि उसको नहीं पता कि ये किसके पास है, राइट। अब जब ये हो गया तो इसके अंदर ये आर्प हेडर भेजेगा अपना। और आर्प हेडर में क्या होगा, आर्प हेडर में होगा आपके में दैट वुड बी सोर्स आईपी, राइट। एंड सोर्स आईपी क्या हो जाएगा आपका, .1, राइट। और आपका सोर्स मैक वो क्या होगा, ए का मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी दैट विल बी योर .4, राइट, पीसीडी का आईपी एड्रेस। एंड डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, 00, राइट, मीन्स दैट दोनों, ठीक है। सो ये फ्रेम सबके पास कैसे जाएगा, बिकॉज ऑफ इट इज डेस्टिनाइड टू द ब्रॉडकास्ट एड्रेस विच इज एफएफएफ, राइट। अब आपको ये समझ में आ गया, पीसीए ने ब्रॉडकास्ट किया, राइट।
अब ब्रॉडकास्ट किया, पीसीबी के पास गया, पीसीसी के पास भी गया और डी के पास भी गया। अब इस पैकेट का जो समरी होगा, यदि आप इसको समझें, तो ये भेजेगा कि हु हैज डॉट फोर, हु हैज डॉट फोर, राइट। डॉट फोर आईपी टेल टू होम डॉट वन, ठीक है, सॉरी डॉट वन, राइट। अब ये फ्लड हुआ तो ऑफकोर्स पीसीबी के पास गया, पीसीबी के पास तो है नहीं डॉट फोर, राइट। तो वो क्या करेगा, पैकेट को और सॉरी फ्रेम को डिस्कार्ड कर देगा, राइट। अब जैसे ये इसके पास गया, ये भी डिस्कार्ड कर देगा क्योंकि इसके पास भी नहीं है, लेकिन डॉट फोर के पास है, राइट। तो डॉट फोर क्या करेगा, डॉट फोर इसको वापस रिप्लाई करेगा, राइट। क्या भेजेगा, तो फर्स्ट जो हमने भेजा था दैट वाज द आर्ट रिक्वेस्ट, क्या था, आर्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब जब ये भेजेगा वापस, लेट मी चेंज दिस, ओके, नाउ दिस guy would be sending the ARP response, क्या भेजेगा, ARP response, ठीक है। क्या होगा ये, ARP response, ठीक है। अब जब ये ARP response भेजेगा तो उसमें क्या इंफॉर्मेशन होगी, उसमें होगी आपकी, आई कैन राइट इट हियर, ओके। सो द सोर्स मैक would be its own मैक, राइट, पीसीडी का। डेस्टिनेशन मैक would be पीसीए का, क्योंकि इसको पता है कि किससे रिक्वेस्ट आई है और मेरे को जवाब देना है, तो मैं ऑफकोर्स डायरेक्टली भेज सकता हूं। तो ये क्या था, ब्रॉडकास्ट। अब ये क्या हो गया, यूनिकास्ट, ठीक है। अब जब ये यूनिकास्ट हो गया तो अब इसके अंदर जो आर्क में इंफॉर्मेशन जाएगी वो क्या हो, उसमें क्या होगा हेडर में, उसमें होगा आपका सॉरी, उसमें होगा आपका एस आई पी मीन सोर्स इंफॉर्मेशन, सोर्स आईपी एड्रेस, दैट वुड बी डी, सोर्स मैक वुड बी डी, destination IP would be PCA, and destination MAC would be of the MAC address of A, right? अब क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, राइट। कहाँ पे अपडेट हो जाएगी, पीसीए की आर्क टेस्ट टेबल में, राइट। तो आर्क टेबल में क्या हो गया कि भाई इसमें क्या अपडेट होगा कि डॉट फोर, राइट, इज रीचेबल, आई मीन द मैक एड्रेस ऑफ इट इज डी एंड इट इज बीइंग लर्न बाय डायनाम, करेक्ट। अब जब ये डायनामिकली लर्न होगी तो अब नेक्स्ट जो पैकेट जाएगा और या फ्रेम जाएगा पीसीए से, वो डायरेक्टली जो है किसके पास चला जाएगा, डायरेक्टली इट कैन गो टू दिस guy this time, not to any other. So this is how it completed its ARP table, right? So ARP table कर क्या रहा है यहाँ पे, ARP table आपका मैक टू आईपी, सॉरी आईपी टू मैक की मैपिंग कर रहा है, and that is how you got to know the physical address in every NIC. When I say the NIC, network interface card, right? जैसे आपके पीसी में वाईफाई कार्ड है which is you are able to connect to the wireless, तो उसमें आपका एक मैक एड्रेस है वायरलेस कार्ड का। यदि आपके पीसी में एक RJ45 केबल कनेक्ट करने वाला कनेक्टर है, निक है, उसका भी एक मैक एड्रेस है, राइट। सो एज मेनी एज यू निक हैव, योर वन ऑफ द वन फिजिकल एड्रेस वुड बी मैप, राइट। अब आप समझ गए कि भाई आप कैसे काम कर रही है और आपकी जरूरत क्यों पड़ी, राइट। बिकॉज हमें जब तक फिजिकल एड्रेस नहीं पता है तो तब तक हमें नहीं पता हमें डिलीवर कहाँ करना है, राइट। सो दैट इज हाउ द नेटवर्क ऑल्सो वर्क, राइट। अब मैं क्या करता हूं आपको आर्क दिखाने के लिए, आई विल स्विच टू दी CMD, सो लेट्स गो हियर एंड टाइप आर्क माइनस ए, ठीक है। तो अभी आर्क माइनस ए में यदि आप देखोगे तो
तो ARP minus A कहता है 192.168, I mean, like I was explaining, the table is internet address, physical address, and the type, right? So 192.168.1.1 is what is the physical address of it? This thing, right? And entry is being learned as a dynamic, right? Rest of these entries, like the broadcast one is static, and these are the multicast one, which are also static, right? अब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, वायरसार को ओपन करते हैं और इसकी एंट्री को डिलीट करेंगे, एंड देन विल सी कि आर्क कैसे बन रहा है, राइट? सो लेट्स सी आर्क, सॉरी, वायरसार, एंड हम अपना निक सेलेक्ट करेंगे और ऑन कर लेंगे वायरसार को स्टार्ट, ठीक है? इसमें मैं फिल्टर लगा लेता हूँ आर्क का, क्योंकि बहुत सारे हैं, I mean, this is on live internet, so there are a lot of things. ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, इसको आर्क को डिलीट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, आर्क माइनस डी टू डिलीट ऑल द एंट्रीज, आर्क माइनस टी टू डिलीट द स्पेसिफिक एंट्री, आर्क माइनस टी, एंड देन आईपी एड्रेस ऑफ इट, ठीक है? सो मैं, there is so many things are happening on this thing. I'll continue without saving and we'll say D, ठीक है? So R minus D किया, and then R minus A, ठीक है? अभी 1.1 की दोबारा से एंट्री बन गई, because this is my default gateway where my internet is talking. So now I will stop this and will try to see the ARP request for .1. Okay, so let me see where it is. Okay, this one, right? So if what I'll do, I'll just follow, apply the filter. No, wrong. Well, I'll just go back and put the ARP again. So here we have the ARP request, which is being, who has 192.168.1.1 tell to the 192.168.7.1. So ये किसने भेजी है? BC:D2. अब मैं इसका मैक एड्रेस जानना चाहूँ कि कौन है ये, तो मैं इसमें देख सकता हूँ ipconfig/all, sorry, ipconfig, sorry for typo. And if I'll see that what NIC, I'm talking about the wireless NIC, and that is where you can see BC:D2. Okay. Now BC:D2 is the my MAC address. That is where my PC sending ARP request, and that if we go down little bit of looking in this window, it says that this BC:D2 sent to broadcast. That is where you can see this is being translated, just to showcase better. That's the wireshark capability. Now you can see FFFF is your wire, the targeted MAC address, right? That means to say broadcast to everyone, right? Now who will respond? And that is inside of the ARP request. What it is sending? It is sending the, of course, the opcode is a request, means that opcode 1 means request, opcode 2 means response, right? And that is where you see the source MAC address is the MAC address of the PC which is sending, and the sender IP address also, and then target MAC address is 000, means that I don't know, tell me who it is, right? And then target IP address, that 1.1.1. In the response of that, what 1.1 is responding, it is saying, if we look the next packet, it's saying the opcode reply, right? And before that, let's go back and see that what is the frame information. So in the frame, you see that 0200, which is the actually the destination was before, I mean, is the one which is having .1, and the destination is the PC BCD2, which is this PC itself, right? Now opcode is reply to, which means that response, and then of course you can see that all the information is feeding. So the
the sender MAC address and the sender IP address 1.1. So the 1.1 is now giving its own MAC address, and that is how this got to know this information, right? So now let's check that how we can make the static entry, right? So far we have seen the dynamic and static, but what if I want to make some entry into the static? And for that, we will use ARP minus S. Okay. So when I say the ARP minus S, I can put the static entry, but there is a format which I need to follow to make the static entry. And that is where I'll say 192.168 1.254. Let's say I'm entering for 254, which is not listed here, right? And now I'll use the dummy address AAA, right? It has to be proper format and the bytes, right? So now I will say enter, right? Now if I'll do ARP minus A, this entry has been created, and that is what you can see this thing, right? So how we can create this entry? ARP minus A, and this entry is this entry can be deleted automatically if you rebooted the system. Until you don't reboot, it will remain B. But if you want to keep it even after reboot, that is where we can put the persistent, and this will remain be there. There is the specific keyword, you can look on the internet. Okay? Now, so far, so we discuss about talking, figuring out or understanding that how art does help within the same network if you are talking within the same network. But what if you are, how the art will help when the communication is happening outside the network, right? To the different network, right? So in this scenario, what we have is the different network, right? So what we have is we have uh, our PCA and PCB, which are connected to the switch, and switch is further connected to the R1 router, and then R1 is further connected to the server, right? So how the ARP will help here, right? So ARP will help here. Let's say for an example, PCA is trying to reach to the 8.8. So what you go and on the PCA same like before, and you open the CMD and type the ping 192.168.1 dot, sorry, rather than we should type it ping 8.8.8.8.8, right? The destination which we want to reach. Now, of course, PCA would try to reach to the 8.8, but again, it will try to find out the MAC address. But before that, what it will also do is that it will check the destination is into the same subnet or into the different subnet. So let's say this one was having dot one using the 192.168.1.1, and this one was having a 254, right? Which means that 254 is gateway. So for an example, this is the IP for this thing. Gate subnet mask is 255, 255, 255.0 push less for 24. This would be the, and then the gateway is, default gateway is 254, means 192.168 1.254. Okay, so 192.168.254 is the gateway, and then of course DNS and other information, right? Now let's say ping is trying to, this PC is trying to ping to the 8.8.8. What it will see that, okay, this server which I'm trying to reach is the 8.8.8 is in my subnet or is into the different subnet. And how would it check? Is that by looking on the subnet and subnet mask, right? We're looking on the IP address and the subnet mask, right? So in this case, it is of course clearly first octet itself is into the different subnet. It is clearly saying that it is into the different subnet. Now, as soon as it get to know the destination is into the different subnet,
उसको जैसे ही ये पता चलेगा कि डेस्टिनेशन तो यार दूसरे सबनेट में है, राइट, उस केस में वो क्या करेगा, उस केस में वो आर्क टेबल चेक करेगा, उसको पता चल गया कि अब मेरे को डिफॉल्ट गेटवे को भेजना है ये पैकेट, राइट, बिकॉज दैट इज इनटू द डिफरेंट सबनेट। अब डिफॉल्ट गेटवे क्या है, ये .254। तो अब ये क्या करेगा, ये अपनी आर्क टेबल चेक करेगा। इन आर्क टेबल में क्या चेक करेगा कि यार 254 का मैक एड्रेस क्या है, राइट। तो आर्क टेबल में लेट्स से 254 का मैक एड्रेस नहीं है, राइट। सो अगेन सेम थिंग, you have the internet address, that format, right? And then you have the physical address, right? What you were seeing. And then you have a type, right? Now, internet address, of course it have, but then what is the MAC address, right? There is no entry for it, right? So if there is no entry for it, what it will do, it will try to send the ARP request for 254. So what it will say, tell me who has .254, right? And that is where again that request would be broadcast, right? Because same methodology, right? What we were discussing before. Now, as soon as it go to the switch will of course forward to the all the ports, and then further 254 will respond back because it have, and that is where it will respond with its own MAC address, and that is how now it will get to know that what is the entry for 254 is the MAC address, let's say MAC address of R1, right? And then type is dynamic, right? Now that is how PCA build the ARC table. Now as soon as this build the ARC table, what will happen? This guy will further forward the packet to the R1, and that is where the destination MAC address into the Ethernet would be R1 MAC address, and source MAC address of would be the PCA MAC address. But just to keep it in mind that the source IP address would be now still would be the .1, right? And destination IP address would be your 8.8.8, right? So what does it mean by that? Source IP and destination IP address would never change, right? So this MAC address is helping you to communicate into the local network, right? Local segment, right? तो आपका सोर्स आईपी भी वही रहा, डेस्टिनेशन आईपी भी वही रहा, आपका मैक एड्रेस स्वैप होता रहा एज द फ्रेम नीड टू बी फॉरवर्डेड, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, द आर्क इज on which layer of the OSI model does it work? This ARP does work on the layer 2, right? Why layer 2? Because यदि आपने पैकेट देखा होगा तो वो OS, I mean on the layer 2 because of this one is not having the IP header, right? So just to show you again, this one does not have IP header. It have the Ethernet header, and then the of course then the directly ARP header, right? Not ARP information, not the IP header inside of it. That is why we say ARP work on layer 2. All right. So that's it for today's video. Thank you so much for watching. Please do subscribe and share with your friends to help them. Thank you so much.